मुझे मंत्री मान पचार देवा चाहूँगी आपण इलेक्शन जिते आपण टेन्यूर सर आज्ञा तापर आपण 5 वर्ष लेट इलेक्शन करूँ आपड़ जदि पेसेंसफुली बसी पारे आम आज्ञा 10 वर्ष बसू ये आज्ञा ओडिशार शिक्षा व्यवस्थार नग्न चित्र ये मेधावी मान कथा शुणापी आज्ञा कही ना तेणु आपण जदि मे 19 भितर केस न सारती आम आज्ञा धसई पशु बासभवन धसई पशु एसएससी ऑफिस दरकार बोले मुख्यमंत्री जो आम से मुझे कहली सरकार को पचार चाहूँ जो आड़े एडवर्टाइजमेंट कैंसल होता कौ आड़े ना यूजीसी नियम को भायोलेसन करूटा ना स्टेट सिलेक्शन बोर्ड जो एडवर्टाइजमेंट काढ़ी मो पाखे गोटे गवर्नमेंट गोटे दस्तावेज अच्छी कौन अच्छी आपड़ देखिपारे ये मेंशन अच्छी दे आर नॉट स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मैंने जोटा एसएसबी जोटा रिक्रुटमेंट हो गवर्नमेंट पोस्ट नुहे नॉन गवर्नमेंट एडेड कॉलेज पोस्ट माने ग्रांट देले चलो ना तो बंद हो फास्ट कथा सेकेंड कथा आपको देखी ये क्लीयरली मेंशन अच्छी दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू यूजीसी स्केल ऑफ पे माने यूजीसी रो जो पे स्केल अच्छी से माने से सुविधा पाऊना को माने एसएसबी लेक्चर माने ताले आज्ञा प्रश्न करी ताले केते दिन आपण एई सब आपण पाखरे गवर्नमेंट रो जो दस्तावेज अच्छी आपण क्लियरली मेंशन करिसेंती तापर आपण केते वर्ष नेबे केस को सारिया पई आपणक चाकरी रे सर्वनिम्न बयस 21 रु सर्वोच्च 42 जो पिला मानकर 2024 मसीह 42 वर्ष से मैंने अप्लाई करते 2026 बेलू 45 हो गला दे आर नॉट इलिजिबल फॉर नेक्स्ट रिक्रुटमेंट से मैंने इलिजिबल नुहति रेस्पॉन्सिबल कौन गवर्नमेंट रे उच्च शिक्षा मंत्री तार उत्तर टिके देवे सेकेंड कथा कहि आज्ञा आपण आम सांगरे रिट अपील गले कोर्ट को आम जिते सिंगल बेंच जजमेंट को आम चैलेंज कलु गवर्नमेंट आम सांगे गले डबल बेंच को केस करने आम गोटे पार्टी नुहे गवर्नमेंट भी आम सांगे पार्टी ताले आज्ञा गवर्नमेंट जदि आम सांगे रहीकिना 3 वर्ष लगुच आम था आज्ञा 10 वर्ष कोणार्क मंदिर गढ़ाला भाया 1200 बढ़े 12 वर्ष चलो ये हूँ शिक्षा व्यवस्था मंत्री को पचार चाहूँगी गढ़ा होता मेधावी भविष्य को आप सजाड़े ना गढ़ा होता भविष्य को आप उजाड़ी देवे यहाँ प्रश्न मुझे पचारुची आज्ञा आपण सबकि काढ़ी मेंशन कर आम कहूनी यहाँ आपंकर दस्तावेज कहूँ आम जदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय नुहे ताले आपण यूजीसी नियम हिसाब से आप देखिए ओडिशा रे यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस एक रिक्रुटमेंट कर कोए ओपीएससी कर तो नुआ एनईपी आसीगला बीसी रिक्रुटमेंट करेंगे कौ मानू असिस्टेंट प्रोफेसर मानू ताहले सेठी केवल क्वालिफिकेशन कौन ना आपणकर पीजी रे 58% कैरियर जोटा नेट पीएचडी सेठी आपणकर क्वालिफिकेशन मार्क ताहले एसएसबी कौन करुच्ची ये रिटिन करुच्ची नेट थिया पिला 10 पीएचडी 25 भाईबा आज्ञा करुच्ची आमे आमे एटा भल प्रोसेस रे जाउचु ना यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस जमी जाऊँगी कैरियर विथ भाईबा तामान सेटा भल अच्छी ताले आपण यदि सबकि कर केस को केते वर्ष ने आपण कौन चाहते आपण ओडिशा रे शिक्षा व्यवस्था बदली गलानी आपण बेंगल शिक्षा व्यवस्था को जो कर एटी एम्प्लॉयमेंट हजार हजार छात्र बुलूँ सेठी एम्प्लॉयमेंट देवार नारा दौरान आज्ञा ये सब प्रहसन बंद करूँ आपण को आउ गोटे कही रखा चाहूँगी ये जो वर्षर कोर्ट मे 19 आज्ञा बंद हो जून 25 पर्यंत आज्ञा कौन 26 सरजीव 27 पंचायत इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट या पर आसो आज्ञा आपंकर विधानसभा इलेक्शन आज्ञा मुझे मंत्री मान पचार देवा चाहूँगी आपण इलेक्शन जिते आपण टेन्यूर सर आज्ञा तापर आपण 5 वर्ष लेट इलेक्शन करूँ आपण जदि पेसेंसफुली बसी पारे आम आज्ञा 10 वर्ष बसू ये आज्ञा ओडिशार शिक्षा व्यवस्थार नग्न चित्र ये मेधावी मान कथा शुणापी आज्ञा कही ना तेणु आपण जदि मे 19 भितर केस न सारती आम आज्ञा धसई पशु बासभवन धसई पशु एसएससी ऑफिस दरकार बोले मुख्यमंत्री जो आम से आमको जदि भूल कहूँ आज्ञा अरेस्ट करूँ किसी असुविधा नहीं गोटे डिमांड 19 भितर केस सारतु तुरंत एग्जाम करूँ जून भर As my brother told that my age criteria
has already expired. Now, if fresh advertisement will come, then I will not be able to appear the exam. Okay, this was the last exam I filled out my form. That I filled out my form in April 2024. I am sitting for the last long 2 years. That after 1 month exam will be conducted, after 2 months exam will be conducted, after 3 months exams will be conducted. But no exam. The government is sitting very comfortably. They have a power position. They are leading very luxurious life. They can think of the common man. How a common girl or common boy is suffering, how an educated common boy or common girl is suffering. They have their own family. How that family is sustained. You just think about a male. Many males are also sitting, aspiring for the conduction of the exam. What they will do? How they can sustain their family? The government is not at all thinking about anything, about us, the aspirants. It's very real that when the advertisement was published, it was written that the minimum criteria was 55%, only 55% in PG. Still it was there, another criteria was there that MPhil students will get 10 marks extra and PhD students will get 25 marks extra. So what is the problem? When that Amir Barik sir filed a case against the conduction of the exam and not to take the non-PhD or non-NET candidates, then he doesn't know that the minimum criteria was this. And of course they are getting more marks. So what is the problem? They can very easily get that exam. They can very easily crack that exam. Now, why do they compare? Why do they compare and compete with the non-NET and non-PhD students? Non-NET and non-PhD students, if we shall see the previous data, previous statistics, then many more non-PhD and non-NET students have qualified the exam than the PhD and NET students. That means the non-NET and non-PhD students have more innate potential, more laborious than the PhD students. They are more capable, they are more efficient. So what is the problem? Why do you compare yourself with the non-NET and non-PhD students? If still you have PhD or NET, why don't you fight for the earliest conduction of the exam? Why don't you fight for the earliest resolution of the case that is pending for the last 2 years almost? Why don't you try for the early resolution of the case and early conduction of the exam? So I do appeal each one involved in this process, in this recruitment process, each one of the government, maybe Honorable Advocate General, maybe Honorable Chief Minister, maybe Honorable Education Minister, maybe anyone else, any petitioner, any person, any employee, to at least take a single step forward for the speedy resolution of the case and give justice to the aspirants. Don't play with the career of the aspirants. Give justice to the aspirants. Early justice, speedy justice. As my brother told, Bapun Bhai told that if you can you delay your election for another 5 years? No. Then why you are spoiling our career? You are giving us jobs. Why you are opening universities? So many students are qualifying their exams, PG exams, and they are sitting vacant in their homes. With a lot of hopes. Yes, we are taking a lot of steps for the educated aspirants, but we are practically doing nothing in real life because you are leading a very luxurious life. You have everything. You are not fighting for the survival. You are not fighting for the sustenance. You are not fighting for existence. No, not at all. You are occupying very high positions, honorable posts, esteemed positions. You don't have any botheration for the survival of the common people. So I do again appeal everyone involved in this process, Advocate General Sir, Honorable Chief Minister Sir, Honorable Education Minister Sir, and any advocate, any common human being, all the aspirants to take at least a single step forward and solve this process that is lying in the court for the last 2 years, that is pending in the court for the early resolution of the case. Thank you.